Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the figure given below showing in particular? गिवन फिगर में हमें क्या दिखाया जा रहा है और उसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज वेनेक्टोमी, वेसिक्टोमी, यूट्राइन कैंसर या ट्यूबिक्टोमी. इसके लिए सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी आवर की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन. कॉन्ट्रसेप्शन का मतलब होता है टू अवॉइड एनी unwanted pregnancy. So there are certain methods that can be helpful in avoiding any unwanted pregnancy. There can be two major methods. One is the temporary methods and another one is the permanent methods. Permanent methods, or they are also known as surgical methods. Now let's understand that what are these surgical methods in detail. सर्जिकल मेथड्स के अगर बारे में हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे पहले ये समझना होगा कि सर्जिकल मेथड्स की ज़रूरत क्यों है. सर्जिकल मेथड्स, एज यू नो, आर द परमानेंट मेथड्स. ये परमानेंटली गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं. सो गैमीट ट्रांसपोर्ट इज परमानेंटली ब्लॉक्ड, हेंस देयर इज नो अनवांटेड प्रेगनेंसी दैट विल हैपन और इट विल प्रिवेंट conception. परमानेंट मेथड्स दोनों ही केसेस में अप्लाई होते हैं, लाइक इन केस ऑफ मेल्स एंड इन केस ऑफ फीमेल्स एज वेल. दीज आर ऑल्सो नोन एज दी स्टेरिलाइजेशन मेथड्स. मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स के केस में होता है वेसिक्टोमी एंड फीमेल्स के केस में होता है ट्यूबिक्टोमी. एज वी नो that in case of females there are fallopian tubes that receive the gamete, right? So fallopian tubes are going to receive the gamete, or we can say egg or ovum, from the ovaries. So if we block the fallopian tube, as fallopian tube is also the site for fertilization, fertilization के लिए site भी है fallopian tube. तो if we block this, then yes, there can be no fertilization take place, right? If we block the fallopian tube, if it is cut down, then no fertilization can take place in this case. Similarly, अगर हम वेसिक्टोमी की बात करें तो वेसिक्टोमी में we have vas deferens. Vas deferens is the one that is going to carry sperm. So in this case, if vas deferens is going to be cut down or permanently blocked, then sperms cannot reach for ejaculation. Now, if we talk about the diagram that is shown to us, so the diagram is this. As you can see, in the particular diagram, we can see a pair of tubes, right? And these pair of tubes are going to occur in female reproductive structure. As we know that in case of female reproductive structure, we have a pair of fallopian tube, a uterus is there, and a pair of ovaries are also there. So over here, if we have a look, this portion is being cut and tied. So we can say that fallopian tubes are being cut and tied. Thus, over here, tubectomy is being shown, and hence our final answer is option D. I hope you understood well. Best of luck.